नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने और चांदी के भाव में लगातार तेजी जारी है। सोने का भाव पिछले 9 दिन में 4,000 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया दोस्तों। और भाव 80,000 रुपए के पार पहुंच गया। कई शहरों में तो 81,000 के पार। आज सुबह जब सोने का भाव खुला तो 81,000 के पार भी पहुंच गया। पर अधिकतर शहरों में सोने का भाव अब 80,000 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। इसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। साथ ही हमने एक इंटरव्यू किया है मिस्टर पीटर थॉमस, जो कि गोल्ड एक्सपर्ट है, बहुत ज्यादा अनुभवी है। इनका व्यू भी हम आपको आज सुनाएंगे, वो इंटरव्यू भी आज आपको सुनाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं आप, तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। दोस्तों, सोने और चांदी के भाव में, चांदी से ज्यादा सोने के भाव में ज्यादा बड़ी तेजी देखी जा रही है। आप अगर देखोगे तो पिछले 9 दिन में सोने का भाव 4,000 रुपए से ज्यादा तेज हो गया है। और इसके पीछे एकमात्र कारण है जियो पॉलिटिकल टेंशन। जियो पॉलिटिकल टेंशन मतलब रूस और यूक्रेन में जो तनाव चल रहा है, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। और इस कारण की वजह से सोने और चांदी में तेजी आ रही है। और यही कारण के कारण सोने का भाव भारत में 80,000 के पार पहुंच गया। जैसा मैंने बताया आपको, 9 दिन में सोना 4,000 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। आज सोने का भाव 80,400 रुपए है। 800 रुपए की इसमें तेजी है। 22 कैरेट 75,200 रुपए है। और 20 कैरेट सोने का भाव वहां पर 68,500 रुपए है दोस्तों। सो सोने और चांदी, चांदी 93,800 रुपए, इसमें भी आज 800 रुपए की तेजी है। लखनऊ सराफा बाजार में तो सोने का भाव 81,000 के पार पहुंच के 81,400 रुपए हो गया है। आज जो लखनऊ सराफा एसोसिएशन ने भाव जारी किया है, उसमें सोने का भाव 81,400 और चांदी 95,000 रुपए हो चुकी है दोस्तों। 22 कैरेट सोना अब करीब करीब 80,000 पहुंच रहा है, 79,100। 14 नवंबर को सराफा बाजार में सोने का भाव 76,200 रुपए था, जो आज 80,400 रुपए खुला है। सो इसमें 4,200 रुपए की तेजी आ गई है। चांदी का भाव 14 नवंबर को 90,800 रुपए था, जो अब 93,800 रुपए है। इसमें भी 3,000 रुपए की तेजी आ चुकी है। आईबीजीए का जो गोल्ड रेट है 14 नवंबर का, आप देखोगे 73,739 था शाम का रेट। जो कल शाम को जो क्लोज हुआ, चूंकि आज आईबीजे रेट जारी नहीं करता है, एमसीएक्स और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसकी छुट्टी होने के कारण रात का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसके बाद डायरेक्ट मंडे को भाव जारी होता है। तो कल 22 नवंबर को उन्होंने 77,787 रुपए का भाव जारी किया था शाम को। इसमें भी 4,000 रुपए की तेजी। और चांदी 14 नवंबर को 87,100 थी, जो कल 90,850 तक पहुंच गई। इसमें 3747 रुपए की तेजी आ गई दोस्तों। रात में एमसीएक्स 950 रुपए की तेजी के साथ 77,650 के आसपास क्लोज हुआ दोस्तों। और चांदी 876 रुपए की तेजी के साथ 90,800 के आसपास क्लोज हुई। इंटरनेशनल मार्केट में रात में भारी तेजी देखी गई। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें भी तेजी थी। उस समय भी $43 के साथ तेजी के साथ 2718 सोना कॉमेक्स पर, और चांदी 31.40, इसमें 1.5% की तेजी है। स्पॉट मार्केट भी रात में तेजी के साथ ही बंद हुआ। स्पॉट मार्केट में चांदी 31.31 और सोना 2715। तो सोना वापस $2,700 क्रॉस कर गया। और कल इसमें स्पॉट मार्केट में $47 की तेजी आई। और तेजी का कारण जैसे मैंने आपको बताया कि रूस और यूक्रेन में जो तनाव बढ़ रहा है, वो तेजी का बड़ा कारण है। पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बिडेन, उन्होंने यूक्रेन को मिसाइल से, अमेरिकी मिसाइल से हमले की इजाजत दी।
यूक्रेन ने हमला लगा तुरंत दूसरे दिन ही कर दिया। फिर दूसरी तरफ से खबर आई कि रूस ने कोई नई मिसाइल यूक्रेन के ऊपर लॉन्च की, और रूस ने अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, जिसमें वो परमाणु हमला कब करेंगे उसके नियमों को भी शिथिल कर दिया। सो ये टेंशन की वजह से भाव में तेजी आई दोस्तों। एसएमसी ग्लोबल का क्या मानना है? एसएमसी ग्लोबल का मानना है कि अगले हफ्ते गोल्ड प्राइस की जो रेंज है वो 2560 से 2780 तक रह सकती है। बहुत बड़ी रेंज बताई है दोस्तों, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा है, ये किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं पता है, और इसके ऊपर किसी का कंट्रोल भी नहीं है। कोई भी इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता चार्ट कि रशिया कब यूक्रेन पर हमला करेगा या यूक्रेन कब रशिया पर हमला करेगा। ये चार्ट पर प्रिडिक्ट नहीं होता, ये फंडामेंटल कारण है, टेक्निकल नहीं। चांदी की भी इन्होंने 30 से $33 की रेंज दी है। एमसीएक्स का भाव 75,000 से 78,500, ये भी बड़ी रेंज दी है, मतलब अगले हफ्ते ज्यादा बड़ी उठापटक की इनको संभावना रहती है। चांदी 88,500 से 93,000, और इन्होंने इन्वेस्टर्स को लगातार मॉनिटर करने के लिए बोला है जियोपॉलिटिकल टेंशन और फेड क्या सिग्नल देता है मार्केट के लिए। सो सोने और चांदी दोनों में ही लगातार तेजी है। चांदी में उतनी तेजी नहीं है जितनी सोने में तेजी है। सोने का भाव 4,000 रुपए से ज्यादा तेज हो चुका है पिछले 9 दिन में ही। अपने निचले स्तरों पर आया था ट्रंप के आने के बाद, और उसके बाद से लगातार इसमें, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव शुरू हुआ, तब से इसमें तेजी आना शुरू हुई। चांदी भी 3,000 रुपए से ज्यादा तेज हो गई, और आज अगर आप सराफा बाजार में सोना खरीदने जाओगे तो 80 से 81,000 सोना और चांदी आपको 94 से 95,000 प्रति किलो मिलेगी दोस्तों। इंटरनेशनल मार्केट में $2,700 के पार है सोना, और चांदी $31 के पार है। अगले हफ्ते सोने चांदी के भाव क्या कुछ रह सकते हैं? सुरेंद्र मेहता जी का इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, और मैं उसको आज अपलोड करने वाला हूं दोस्तों, और इस वीडियो को मैं 3:30 बजे अपलोड करूंगा। तो आप लोग 3:30 बजे देख लीजिएगा। इंटरव्यू हो चुका है, इसलिए अब इसमें कोई दो राय नहीं कि हम ये इंटरव्यू दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, अभी अंडर एडिट है। तो 3:30 बजे हम इस इंटरव्यू को लाइव करेंगे। तो 3:30 बजे आप सुरेंद्र मेहता जी की राय सोने चांदी पर क्या कुछ होगा अगले हफ्ते, वो जरूर देखिएगा। अब मैं आपको गोल्ड और सिल्वर का 2025 के लिए क्या आउटलुक है, इस पर मिस्टर पीटर थॉमस, जो कि चेयरमैन है ऑफशोर डेवलपमेंट एयू सिक्योर, ये बहुत बड़े गोल्ड के एक्सपर्ट हैं दोस्तों। ब्लूमबर्ग, सीएनबीसी, इनमें लगातार जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के एक्सपर्ट हैं। इनसे मैंने इंटरव्यू किया, उसका छोटा सा एक जिस्ट मैं आपको बता देता हूं। इनका ये मानना है कि ये जो टेंशन चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, अगर ये हट जाता है, अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इनका मानना है कि प्रीमियम जो है वॉर का वो $500 से $600 का इनको लगता है। तो नीचे में इनको लगता है कि 2025 में $2,000 की रेंज, और ऊपर में जो इन्होंने बताई है $3,000 तक भी सोना जा सकता है। तो 2025 में, जैसा कि दूसरे बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस, इन्वेस्टमेंट बैंक प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इनका भी ऐसा ही अनुमान है। चांदी को लेकर भी इनका $35-36 तक जाने का अनुमान है 2025 में। इनसे मैंने इंग्लिश में बात की है, इसीलिए मैंने इनका जो इंटरव्यू का जो जिस्ट है वो आपको बता दिया है। जिन दोस्तों को इंग्लिश नहीं आती है उन लोगों के लिए, जिनको इंग्लिश आती है उनको मैं अब ये इंटरव्यू सुना देता हूं। सो पीटर थॉमस बहुत जानकार आदमी है, 50 साल से ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस है दोस्तों। चलिए मैं इंटरव्यू सुनाता हूं आपको। Hello friends, I am Virendra Vyas, and today we have an incredible special guest with us, Mr. Peter Thomas, chairman of AU Secure, with over experience of more than my age. I will not tell you that, including serving as a broker for the Hunt brothers and frequent appearances on Bloomberg and CNBC. Mr. Thomas brings unparalleled insight into the precious metal market. Welcome, Mr. Peter, to our show.
Well, thank you. It's my pleasure, and I love my Indian audience. It seems that gold and silver, but more gold is sort of in the Indian DNA. They understand it. North Americans, it's kind of new to them. They don't quite comprehend it. So it's always a pleasure to speak to this audience because you understand the value of gold. My first question is about Mr. Trump, the newly elected president. How could Mr. Trump's presidency influence gold and silver prices in the global market? What are your thoughts on that? Well, it's an excellent question. It's a great place for us to jump off to. Trump has not been inaugurated yet. He's been elected. So what's going on right now is on the geopolitical side, which we have to touch on because it affects everything about gold. And we just had President Biden sign into effect the ability for the Ukraine to fire missiles into Russia. Um, Caught everyone by surprise. President Trump has already sent a team to meet with the Putin people to discuss peace. And in the meantime, the person that's still sitting in the office is approving large-scale missiles being launched. So we have a very strong dichotomy here, and it's important for our viewers to understand that when I'm talking about Trump being in office, it's going to be a little bit of time. So we have to pay more attention to what's going on now. And then as Trump moves in, if you recall, 6 months ago on Bloomberg, I said silver is now going to pass over the jewelry phase where it has been primarily used as jewelry, where it's going to be now an industrial metal. And I think the bifurcation, if you will, the splitting of it, it's going to be 60 or 70% of silver, which we've never seen before. And we're seeing it in such things as colloidal suspensions in spraying in the glass panels for solar cells. We're seeing more silver being used for higher speeds in the lead silver combination for the making of solder for the keyboard usage. Silver is going to increase in demand. And what I'm saying now is the reason that we're using this big paintbrush at the moment is that we expect production in America to go up when Trump comes in, lowers taxes, and reduces the overall red tape or bureaucratic stumbling blocks for manufacturing and allows that to pick up. We will see demand for such things as silver wire, and in that nature, we will see them being consumed more, and the underpinning of silver will be much stronger than it's been before. And the question really becomes, are we going to see it hold this $30 area? So you remember, this has been a big rally last 2 years. So $30 is a high number considering when I started recommending it, it was at 18. So, people have done very, very well. But the point being, if Trump's just as just one phase of him, if Trump manages to maintain a lower tax base with his incentives and reissuing or reinstituting some of his tax bases for manufacturing, we'll see silver get strong. As to gold, let's look at his track record. Let's see what we've seen happen. We've seen, first off, he came in and he signed the Abraham Accord. Everybody said it would be impossible for the Arab community to do that. No, not at all. He managed to do it, and he did it within months. So Trump has great friends in the Indian community as far as business goes. We will probably see no tariffs on metals coming out, and that will indeed put more demand on our producing mines. And as far as globally goes, and that will reflect on everything. And gold will, in my opinion, if he
stops the war in the Ukraine, which he's working on now, and he reduces the tensions in the Middle East, we could see gold come. We could see what we call the geopolitical or the war premium come off of gold, and gold could go back down and hang around $2,000 for a while. We have a real tough situation where everybody's coming out going, "Oh my God, we're going to see $3,000. This crazy person, Trump's coming in." I don't see a crazy person. I see the 4 years he was in, gold was under a lot of pressure. The inflation was low, lending was low, gold was being used industrial here in the States, but we had no wars, no aggressions, and things were very calm. So we have to look at it from both sides. And let's say if these wars come to a stop, which he is working on, and but production goes up. Now remember, this is important for our viewers to remember. The supercomputers, the all have like fingered cooling fins, which they use gold for, a lot of gold for heat dissipation. So as they're building more and more giant computers and creating more energy, the cooling aspect of them, the fins that cool them down that are using gold, will have a lot of demand. So it's going to be a tough call. So we could see it at 3,000 due to demand, or we could see it drift back down due to geopolitical tension. I hope that isn't too much for you. No, is there a $800 of war premium there? Oh, I would say, let's see, 25. I would say 5 to 600 is closer. Yeah. Just I was confirming because you are saying it may go to $2,000 if that was will stop in near future. That's why I. Absolutely. Absolutely. But I think it'd take, we're talking about, the end of the year and then into next, it'll probably take almost a year I don't think it's going to be fall out of bed, crazy crash, and at that point, probably going to be an opportunity to buy again, So if inflation goes up from the Fed's 2% target, there might not be the rate reduction as they are planning for now. Right. And I that think will that's a also very impact gold. valid point. Yeah, I'm glad you brought that up. But the question is, will we see inflation go up if we see lower taxes and more revenue stream? Probably not. Probably not. Everybody, all the experts that missed this gold rally, and and they're all talking about, oh, gold's going to $1,000. It's no good. And now, it's now we're seeing like, oh, well, gold can go to 3,000 for sure. And I always worry about the so-called experts that are in their ivory towers, if you would. And I think that we might not see an inflationary. We might actually see a deflationary because going back to energy and food, which are the two things that they cut out of the inflationary number recently, which is hysterical. I mean, that's the number one expenditure is food and gas and oil. So, but I think if we see those come down, we'll see a contra-cyclical event occur where we'll see inflation go down, dollar, and the question becomes, if we have a lower interest rate, how strong will the dollar be? If we're not paying the highest number, but we have seen the Bank of England, for example, they just cut their rates. So we could see the Canadians came in and cut their rate. So we could see rates going down and energy prices going down and inflation going down, which would be what's referred to as contra-cyclical, but I believe it could occur. So what is your outlook for 2025 gold and silver? I think first off, my friend, what's important is what is going to be built. What are durable goods going to look like? How much silver is going to be consumed? How much base metal is going to be consumed? I think that silver is going to be needed more than ever.
So I like silver. I like silver holding the high 28s, 27s. If we break, it's still going to be, people are going to look at that as a buying opportunity. People that I deal with individuals that produce silver wire. And that silver wire is absolutely important because it has a low R factor, a low resistance factor, and it passes electricity very, very well. So I think we'll see that consumed. Gold, if it stays up here and people are still nervous and we don't see the geopolitical issues go away, and I think we'll definitely be above 3,000 in 2025. If we see Trump come in and he sits down with his friend Putin and they discuss the frivolity of war and the useless deaths and the horrors that always come with war, unfortunately, and we get that put aside and we get that war premium that Americans are paying. And also, we see Israel start to make peace on all four border fronts. That's a lot. If Trump is unable to talk common sense to some of these people initially, I think gold to stay up here and could certainly continue higher. So it's a tough call on the gold side. Very positive to palladium and platinum and silver for industrial usage, and gold as far as an intrinsic value goes. We could see 3,000 if things don't smooth out, but we could see 2,000 if Trump does what he did in the prior administration that he had. And silver, upper target for silver? I think my upper target for silver is 35, 36. As you know, I was the first person in the world to trade silver at $50. I was holding the silver deck. It was, when you're on the floor, those crazy guys screaming and hollering. I was one of those, and I had the orders. And order came in, and it said buy 50, buy 100 at 50, and I bid it out 150, and the whole floor went quiet for an instant, and the kid who puts the prices up wrote $50, and everybody, oh. It was such a moment, and I could still feel it. I've traded it there, and so 35 doesn't look crazy to me. I think that if production demand, remember that demand is the issue. If demand is there, we will still see silver solid and going for years at that level because of the durable goods and computers and TVs and things of that nature being built. And what are your thoughts on India? On India? Your thoughts on India? I'd love to. I see nothing but bright sunlight coming for India. I love the idea that Trump's in office. He has a great deal of there's a lot of mutual respect between India. Your people are just phenomenal traders. They really understand markets so well. And Trump and Modi are close. I think we'll see it get closer. Thank you so much, Peter, for joining with us and gave such a very wonderful insight on gold and silver market. Thank you so much. It's really been my pleasure to be with you. I'm looking forward to doing it again. सो दोस्तों, ये पीटर थॉमस थे। और एक और बात मैं बता दूं इनके बारे में, हंट ब्रदर्स ने जो चांदी की ट्रेडिंग की थी, उस ट्रेडिंग में फिलिंग ब्रोकर का काम इन्होंने ही किया था। जो $50 तक चांदी गई थी, उसको जो ऑर्डर लेकर जहां ऑर्डर भरते हैं वहां पर ऑर्डर भरने वाले यही मिस्टर पीटर थॉमस थे हंट ब्रदर्स के लिए। और इनके सामने मतलब इन्होंने ही जो $50 तक चांदी गई थी, वो जो है इनके ऑर्डर देने के बाद ही गई थी। इसलिए मैंने इनका इंटरव्यू किया है। बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और
ब्लूमबर्ग, सीएनबीसी वगैरह जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं वहां पर लगातार ये जाते रहते हैं दोस्तों। सो आज के वीडियो में इतना ही। जाते जाते मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स है तो देख लेता हूं। गुड आफ्टरनून सर, आगे क्या सोना सस्ता होगा, सिल्वर क्यों नहीं बढ़ रही है, पूछिए। सो ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू था दोस्तों इनके साथ। योगेश जी ने पूछा है सिल्वर क्यों कमजोर है, वापस भाव 76,000 आ सकता है क्या। भाइयों कुछ सवालों के डायरेक्ट जवाब दे दिया करो। अब सोना सस्ता होगा या नहीं ये बताओ। विनोद जी ने सवाल पूछा है। मैंने मेहता जी के साथ ये इंटरव्यू किया है अभी। हम 3:30 बजे उसको अपलोड करने वाले हैं दोस्तों, तब आप देखिएगा। मंडे क्या भाव खुल सकता है रिमझिम जी, सिल्वर में रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, विनायक जी, विजय जी, थैंक यू जी, राजेश जी आपको थैंक यू, मीनाक्षी जी, गोल्ड कम्स डाउन और नॉट। सो अभी तो जब तक जियो पॉलिटिकल टेंशन है, जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है दोस्तों, जब तक ये जारी रहता है तब तक तेजी जारी रहेगी। जिस दिन ये खबर आई कि दोनों में संधि वार्ता हो रही है, या युद्ध का टेंशन कम हो रहा है, या पुतिन की तरफ से या यूक्रेन की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कोई ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, तो वहां पर जरूर भाव में गिरावट आएगी। पर ये कब आएगी ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। सो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अंकुश जी, महेंद्र जी, रितु जी, मनोज जी, अनुराग जी, सब आपका धन्यवाद। किरण जी, जगदीप जी, कानू जी, अनुराग जी, चलिए सब आपका धन्यवाद। 3:30 बजे आप मेहता जी के साथ मेरा इंटरव्यू जरूर देखिएगा। बस मैं उसको अभी अपलोड पर लगाने वाला हूं दोस्तों, अंडर एडिट है।